डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ रूमेंट। ये रूमेंट एनिमल्स मिसाल के तौर पर काउ बफेलो गोट सिर्फ प्लांट फूड खेवान वन हर्बिवोर्स ते पता कि प्लांट फूड अत मज सेल्यूलोज तेल गज प्रॉपर मैकेनिज्म या ऑर्गन्स डाइजेस्ट सिस्टमस मज यम अत सेल्यूलोज डाइजेस्ट हेकन करित। सेल्यूलोज पॉलीमर यह गज ब्रोकन डाउन गसन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टमस मज युथ कह एंजाइम कि सेल्यूलोज हेके डाइजेस्ट कर तवे सैनिस डाइजेस्ट सिस्टमस मज सेल्यूलोज डाइजेशन गसान कह। यम रूमेंट एनिमल्स तिहंदिस डाइजेस्ट सिस्टमस मज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तिमन माइक्रो ऑर्गेनिजमन मज एंजाइम सेल्यूलेस युस अत सेल्यूलोज डाइजेस्ट हेकान कर। डियर स्टूडेंट्स, तुम वुचमुत काउ गोट बफेलो तुम वुचमुत घास खेवान। घास खेवान अत चापन दिवान कि सोदी घास वालान बोन खेवान रोजान घास खेवान तो वाला बोन घास खेवान तो वाला बोन अत चापन दिवान कह। युथु गोजा बोन वालान यह वसान म्यादस मज अनिस म्यादस चोर पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रुमेन, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज रेटिकुलम, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज ओमासम, फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज अबोमासम। यम गुजा खेवान चापन बगैर गुजा वालान अत फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक्स मज रुमेनस मज थ्रू द इसोफेक्स इसो फूड पाइप किन गुजा वसान अत फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक्स मज यानी रुमेनस मज। रुमेनस मज वोत यह गुजा यम वत बड़ पार्टिकल्स क्या रूमेंट्स चापन अत गुजास गो दिवान कह, इसलिए फूड वोत डायरेक्टली अत म्यादस मज विदाउट चेंजिंग इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। यह गुजा वोत in the form of bigger particles in the first part of the stomach. एंजाइम्स या बैक्टीरिया मज एंजाइम सह प्रॉपरली हेकन डाइजेस्ट अत फूडस कर क्या फूड बिग पार्टिकल्स, इसलिए अत फूडस गसान पार्शली डाइजेशन। अम पम एनिमल्स तुम वुचमुत गाव कट या मोश कुन जाए बिहत या खड़ा वथित कुन जाए रेस्टस मज पे घास वापस खालान। यह घास वापस खालान वापस खालान यह पार्शली डाइजेस्टेड फूड ये वन कड यह पार्शली डाइजेस्ट फूड ये वन कड वापस खालान बेस कुन दिस पार्शली डाइजेस्ट फूड वापस खोलुक दे ब्रिंग बैक दिस फूड फ्रॉम रुमेन टू माउथ वापस अत गुजास म्याद के गोडनिक पार्ट पे बे वापस मज खालान। अम पे आराम सान अत गुजास चापन दिवान दंदों सत बे अत सलाइवा जुरान सलाइवा नेरान सलाइवरी ग्लैंडस मज मज अत सत जुरान असल पे अत गुजा सत अत गुजास असल पे चापन दिवान पे गुजा वसान बे बैक टू रुमेन यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक्स मज वसान यह गुजा बे थ्रू द इसोफेक्स कह टाइम्स गुजा रोजान बे डाइजेशन गसान अम पे गुजा वसान सेकंड चैम्बरस मज यानी रेटिकुलमस मज। रेटिकुलमस मज युथु गुजा वसान विद बैक्टीरिया अत डाइजेशन गसान बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो अत फर्दर डाइजेशन गसान। अम पे गुजा वसान रेटिकुलम पत ओमासमस मज। ओमासम चैम्बर तथ वन मैनिपुलाइज क्या चैम्बर यह थ्रोन into number of folds to increase area of absorption अत मज folds to increase area of absorption। Absorption क्या गसान water and bicarbonates गुजा सत आब water बे bicarbonates तम अत ओमासम पार्टस ऑफ स्टमक्स मज एब्जॉर्ब गसान। अम पे फूड कंसंट्रेटेड रोजान अम पे फूड वसान लास्ट चैम्बरस मज दैट इज कॉल्ड एज एबोमासम। एबोमासम दिस इज कॉल्ड एज ट्रू स्टमक ट्रू पार्ट ऑफ स्टमक। अत एबोमासम मज HCl बे जूस HCl कर गोम बैक्टीरिया अत गुजा सत उन बैक्टीरिया किल कर क्या बैक्टीरिया अमीनो एसिड नश प्रोटीन बन तुम प्रोटीन HCl कर डिस्ट्रॉय तिहद स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर पे तुम बे सिंपल फॉर्म मज गसान। अम पे गुजा वसान सोरी गुजा वसान बोन इंटेस्टाइन कुन इंटेस्टाइन मज डाइजेस्ट फूड गसान एब्जॉर्ब अचान खूनस मज
Use undigested food سُہ چھُ آسان larger intestines منٛز large intestine منٛز پتہٕ یہِ نٮ۪بر کران تَتھ چھِ أسۍ وَنان defecation. اَمہِ اَپور چھُ تُہۍ وٕچھوُن بیاکھ اکھ animal rabbit چھُ سُہ تہِ چھُ herbivores یعنی سُہ تہِ چھُ کھٮ۪وان صرف plant eating food plant eating animal چھُ سُہ تہِ مگر سُہ چھُنہٕ cellulose ہٮ۪کان digest کٔرِتھ کِہیٖنۍ سُہ چھُ fecal پتہٕ یِتھُے سُہ fecal matter کران چھِ سُہ چھُ سُہ پنُن fecal matter بیٚیہِ کھٮ۪وان یُس تَتھ سُنٛد یہِ گۄڈٕنیُک fecal matter چھُ آسان یہِ چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان cellulose گوٚمُت semi digest اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ fecal matter کھٮ۪وان fecal matter یِژ پھِر یہِ بیٚیہِ کھٮ۪وان چھِ پتہٕ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ منٛز cellulose digestion گژھان appendix منٛز اَتھ پروسیس چھِ أسۍ وَنان کوپروفیگی اَتھ پروسیس یعنی یُس ریبِٹ چھُ آسان یُس یہِ اینِمل چھُ آسان ریبِٹ اینِمل یہِ تہِ چھِ ہربِوورٕس یہِ تہِ صرف پلانٹ ایٖٹِنگ فوڈ کھٮ۪وان أمِس منٛز چھُنہٕ ڈایریکٹلی ڈایجسٹ سیلولوز گژھان کِہیٖنۍ یُتھُے یہِ پتہٕ فیکل میٹر کران چھِ پتہٕ چھِ یہِ بیٚیہِ پنُن فیکل میٹر کھٮ۪وان کیازِ کہِ اوٚتانۍ چھُ آسان فیکل میٹرس منٛز یُس سیلولوز سیمی ڈایجسٹ گوٚمُت پتہٕ چھِ یہِ بیٚیہِ فیکل میٹر کھٮ۪وان اَمہِ پتہٕ چھِ یہِ سیلولوز گژھان ایپینڈکس منٛز ڈایجسٹ بیٚیہِ اَتھ یِژ پھِر یہِ بیٚیہِ پنُن فیکل میٹر کھٮ۪وان چھِ اَتھ پروسیس چھِ وَنان کوپروفیگی اَتھ پروسیس. Dear students, بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ڈایجیشن اِن رومینٹس وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اِنگلِش پٲٹھۍ ڈایجیشن اِن رومینٹس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ وۄنۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ اِنگلِش پٲٹھۍ The ruminants like cow, buffalo, goat eat only plant food, so they are called as herbivores. As we know, my dear students, plant food contains cellulose, so they need mechanism or organs in the digestive system which can digest cellulose. The cellulose is a polymer. It should be broken down into simple molecules. And this cellulose is broken down with the help of the enzyme. That enzyme is called as cellulase. Our digestive system not possess such enzyme, so cellulose is not digested in our digestive system. In ruminants, there are microorganisms, bacteria, which possess cellulase enzyme that digest cellulose in ruminants. Dear students, you must have seen animals like cow, goat, buffalo. They swallow grass without chewing. This grass goes into the first part of chamber of the stomach that is called as rumen. Rumen is the largest chamber. Here partially digestion of cellulose occurs by enzyme of bacteria. This partially digested food is called as cud. Animals then sit and bring back food from rumen to mouth. This is called as rumination. This process is called as rumination. Here, large amount of saliva mixed with food and teeth chew the food. It is sent back to rumen where digestive enzymes of bacteria and other enzymes digest the food. The food is passed into another chamber called reticulum where enzymes and other bacteria act on the food and digest the food. Here, almost digestion is completed. After this, the food is sent back into another chamber that is called as omasum. Omasum is also known as maniplies because omasum has thrown into number of holes to increase area of absorption. Here in this chamber, absorption of water and bicarbonates takes place. The food now becomes concentrated and sent into the fourth chamber that is called as abomasum. This chamber is considered as true stomach as HCl and other juices secreted here. HCl kills bacteria in the food and also destroys the structure of proteins. After this food goes into the small intestine where digested food is absorbed. Undigested food goes into the large intestine and is thrown outside. That process is called as defecation. Rabbit is also an herbivorous animal, but it cannot digest cellulose directly. It eats its own fecal matter again. The fecal matter possesses semi-cellulose digester. It again eats this fecal matter and it digests. Then cellulose is properly digested in the appendix.
This process is called as coprophagy. This process is called as coprophagy. Thank you, students.